Hello everyone, I am Dr. Prerak Soni. I am legal and tax expert. I am associated with the well-known chartered accountant firm for more than 20 years. I am thankful to the Department of Fashion, Technology and Designing, MLSU, Academy of Well-Being Society Udaipur, Swami Vivekanand Balika Shiksha Prasar Samiti, Knowledge Hub Global, for organizing a 2 days international conference on 28th and 29th January 2025 on a very beautiful theme, working women and well-being. Today I am here to discuss about the financial and legal aspect of a woman well-being and startups. Before we start the discussion on this topic, let me understand a little bit about this topic. There are two aspects, financial aspects and legal aspects, and it is connected with startups. So when any woman wanted to start their business, the two aspects they have to take into the consideration, that is the financial aspects and a legal aspects. Now financial aspect covers four things. Basically, first thing, finance, borrowings, financial literacy, mentorship and networking, and financial independence as a pillar of well-being. So here we will going to discuss about the 4 points which are connected with the financial aspects. In the legal aspects, we will discuss about the legal areas. Say for example, the constitution, about the business, rights of the woman at the workplaces. So these two aspects, financial and legal aspects, we will discuss in connected with the startups. So let me start with the financial aspects. Financial aspects, the first point, financial borrowings. Whenever we want to start any business, we need a finance, we need a money to start the business. So size of finance is important. आपको कितना पैसा चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस स्टार्टअप. उसमें ओन फंड, हाउ मच ओन फंड यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट एंड हाउ मच यू आर गोइंग टू बोरो फ्रॉम द मार्केट. There are different government schemes which helps you in borrowing of the money. Mudra scheme is there, Annapurna scheme is there, Stand Up India scheme is there. From there you can borrow the money. You can borrow the money from bank, private bank, nationalized bank, cooperative bank. Even you have an option of a private equity, she capital, venture capital. These are the different modes of the funds where you can borrow the money. In borrowing of the money, the rate of interest play a big role. So you have to select the minimum rate of interest so that the burden of interest will be less on your shoulders, right? Next step, financial literacy. Financial literacy means to what extent you have a knowledge of budgeting, saving and investment. If you are not aware about the same thing, you should acquire the knowledge through different platforms, by take part into the conferences, by take part into the seminars. See, budgeting is important. As a woman, आप budgeting करते ही हैं. Say for example, जैसे ही मंथ खत्म होता है, आप बजटिंग बना देते हैं ना घर का, कि भी क्या क्या कहाँ पे पैसे चाहिए, क्या है क्या नहीं. द सेम वे बिजनेस के अंदर भी एवरी मंथ बजटिंग बनाना ज़रूरी है. सेविंग करना ज़रूरी है और साथों साथ सेविंग का प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करना ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड. सो सेविंग इज इम्पॉर्टेंट. टैक्स प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट, because unless you don't do the proper tax planning, whatever amount you earn, you have to pay to the government as a tax, right? Next point is mentorship and networks, support networks. आप जब भी कोई स्टार्टअप करते हैं चालू, you
The idea creates into your mind. You will going to discuss with someone. Over there, the person who has already a good experience of the same industry, and you make them as your mentor, it will helpful to you because उसके पास एक्सपीरियंस है. अब वहाँ पे भी मेंटर कैसा होना चाहिए? तो मेंटर वो सपोर्ट्स यू, वो गाइड यू, वो गिव यू द बैकिंग of the knowledge, of his skill. तो मेंटरशिप इज इम्पॉर्टेंट, नेटवर्क इज इम्पॉर्टेंट. आपके पास अच्छा नेटवर्क होना ज़रूरी है. नेटवर्क क्रिएट करो इफ़ यू डोंट हैव अ प्रॉपर नेटवर्क. सो मेंटरशिप एंड नेटवर्क प्ले अ बिग रोल. देन वी कैन से financial independence as a pillar of well-being. The more you will be financially independent, you will become, you can able to help your families, your business, your own self. So for a financial aspect, there are 4 points we discussed. Borrowing. Second, yes, budgeting. Saving and planning means financial literacy. Then mentorship and support networks, and financial independence as a pillar of well-being. It means फाइनेंस के रिलेटेड, पैसे के रिलेटेड आपको सब एरियाज कवर करने ज़रूरी है. पैसे कहाँ से लाने हैं, लाने के बाद उसको बिजनेस में अच्छी तरीके से लगाने हैं, लगाने के बाद उसमें से जो पैसे बचते हैं उसको प्रॉपर तरीके से री इन्वेस्ट करना है. और ये सब के साथ साथ आपको खर्चे का प्लानिंग करना है, बजटिंग करना है. यानी कि ओवर हियर यू आर नॉट डूइंग द वर्क एज एन एम्प्लॉई, बिकॉज अगर एम्प्लॉय है तो आपको एक ही कंसंट्रेशन के साथ काम करना पड़ता है. यहाँ पे आप एम्प्लॉयर है, एंटरप्रेन्योर है. सो सब एरिया का नॉलेज आपको लेना ज़रूरी है. अब लेट यू स्विच फ्रॉम फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स टू लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ अ वुमन वेलबीइंग. स्टार्टअप्स में वो कहाँ हेल्प करता है? वेन एवर वी हर्ड द वर्ड लीगल एस्पेक्ट, एक हमारे दिमाग में लीगल टर्म आती है ना, तब एक ब्लैक एंड वाइट पहने हुए, कोट पहने हुए एक वकील दिमाग में आता है. बट ओवर हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लीगल एस्पेक्ट. मीन्स आप जब भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स आपको कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में बिजनेस का मॉडल सिलेक्ट करना है. आपको प्रोप्राइटरशिप चालू करनी पड़ेगी, या फिर आपको पार्टनरशिप चालू करनी पड़ेगी, या फिर प्राइवेट लिमिटेड इज अ गुड फॉर यू, लिमिटेड कंपनी इज अ गुड फॉर यू, LLP इज अ गुड फॉर यू. कौन सा बिजनेस मॉडल आपको एडवाइजेबल है, सूटेबल है आपकी साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, दैट यू नीड टू सिलेक्ट. तो यहाँ पे आपको नेचुरली है, यू कैन डिस्कस विथ योर मेंटर्स, यू कैन डिस्कस विथ योर कंसल्टेंट, लीगल कंसल्टेंट, कि मुझे दिस इज़ माई प्लानिंग ऑफ बिजनेस, सो काइंडली गाइड मी, मुझे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन सिलेक्ट करना चाहिए. दिस इज अ लीगल एस्पेक्ट, वन लीगल एस्पेक्ट. लेटर ऑन मीन्स स्लोली यू हैव सेट अप अ गुड बिजनेस, राइट. से फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बढ़िया सी बना दी. अब वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के बाद, so you need to form the rules and regulation which are favorable for whom, for a working people. So workplace culture, workplace laws should be there, right. In India, to protect the woman and the female, government have introduced so many acts and laws. WEP, Women Empowerment Act or something like that. So there are rules, there are acts and laws which helps the woman to protect their rights against any harassments or whatever, anything wrong with them. Tata Steel in the year 2019
they took a very good initiative. They have introduced a very good policies into their organization, which was in favor of the woman. I think it was for maternity leave or something like that. Even Google, they have also changed their policies. They have make a favorable policies for the employees. They can like be with their kids. They can spend time with the families. So the policies related to work from home and all. See, after COVID, we know that there are so many companies who have introduced a work from home culture. So in a legal aspects, one we understand is framing of the constitution. Second, we understand a workplace environment. So as a entrepreneur, woman entrepreneur, if you want to start a business, आपको ये दोनों चीज़ें समझनी है. लीगल एस्पेक्ट के अंदर अगर हम ऐड करें कि जब आप बिजनेस चालू करने के लिए रेडी है, आपको पता है कि मुझे प्रोप्राइटरशिप चालू करनी है या पार्टनरशिप करनी है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्लेज अ बिग रोल. मीन्स टू एक्वायर अ गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन टैक्स जीएसटी नंबर. अलोंग विद दैट आपको वो भी पता होना चाहिए कि आप समझिए कि आपने बिजनेस का लोगो डेवलप किया, बनाया, आपने एक ही साल में बहुत अच्छा काम किया. अब आपके बिजनेस के सेफगार्ड के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड. सो वो आपके बिजनेस का लोगो जो है वो आपका ट्रेडमार्क करता है और दूसरा कोई कॉपी नहीं कर सकता है. सो इट प्रोटेक्ट्स योर राइट. One more thing, then that copyright is there, patent registration is there. So there are different registrations which protect your thought, intellectual thoughts, we can say, your products. So उसकी हेल्प से आपको आपके बिजनेस के अंदर easily टेंशन फ्री आप डेवलप हो सकते हैं. So let we meet together, let we develop such a beautiful, thoughtful society where we can able to do something miracle for the woman, for their upliftment, for their well-being. Thank you so much. Thank you.